Hello students, how are you all? Again, I present before you with the topic of profit in lieu of salary. I, Dr. Lal Babu Jaiswal, Assistant Professor from BHU, Banaras University, is going to present regarding to the profit in lieu of salary. Profit in lieu of salary is the fourth component of the salary head. First component basic pay, second component allowances, third component is perquisite, and fourth component is profit in lieu of salary. Profit in lieu of salary means the monetary benefits which are provided in addition to salary, which are provided by employer in addition to the salary, are treated as a profit in lieu of salary. Profit in lieu of salary include compensation on account of termination of his employment. Such types of compensation, such types of termination which is due or received by the assessee from his employer, former employer, at or in connection with the termination of employment will be treated as a profit in lieu of salary. Okay, students? Yes, sir. Second one is compensation on account of modification of the terms and condition of employment. If any terms and condition regarding to the employment is modified by the employer or former employer with the modification, and any compensation is paid or due, so this is taxable under the head of profit in lieu of salary. This is taxable under the head of the salary. If any terms and condition regarding to the service is modified by the employer, and any compensation which is paid by the employer to the employee will be taxable as a profit in lieu of salary. Usually, this types of payment is considered as a capital receipt, but by virtue this provision is same treated under the revenue receipt, and it will be taxable under the head of the salary. It is not treated as a capital receipt only, but it is also considered as a revenue receipt, dear students. And if it is revenue receipt, it will be taxable and it will be included under the head of salary. Third one is payment from provident fund or other fund. If any payment due to or received by an assessee from his employer or former employer, from the provident or other fund other than gratuity. Gratuity is given section 10 subsection 10, pension section 10 subsection 10a, compensation received by workman under Industrial Dispute Act 1947 section 10 subsection 10b, from provident fund or public provident fund section 10 subsection 11, from recognized provident fund section 10 subsection 12, from approved superannuation provident fund section 10 subsection 13, or any house rent allowance section 10 subsection 13a are not included at all at the time of computing the profit in lieu of salary. सर क्या मतलब इसका? मतलब दीज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. ग्रेचुटी की अमाउंट, पेंशन की अमाउंट, एनी रिट्रीटमेंट कंपनसेशन की अमाउंट, किसी प्रकार का प्रोविडेंट फंड की अमाउंट,
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की अमाउंट, सुपर एन्वेशन प्रोविडेंट फंड की अमाउंट या हाउस रेंट की अमाउंट आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. In the case of profit in lieu of salary, some points are considerable. If any sum is paid to an employee at the time of maturity from an unrecognized provident fund, it is to be dealt with as follows. इसका मतलब unrecognized provident fund are the fund which is not approved by the income tax authority or government. If at the time of retirement, if the employee gets the amount of या lump sum amount of unrecognized provident fund, so the rules are as follows. First, that part of sum which represent the employer contribution to the fund and interest thereon will be taxable under the head of salary. सैलरी हेड में एम्प्लॉयर का पार्ट और उस पे जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी. सपोज कर लीजिए 10 लाख रुपए मिला तो जनरली 50% माना जाता है. 50% एम्प्लॉयर का पार्ट, 50% एम्प्लॉय का पार्ट. तो 5 लाख रुपए एम्प्लॉयर का, 5 लाख रुपए एम्प्लॉय का. अब उस 5 लाख रुपए में सपोज कर लो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का हो तो 4 लाख रुपए फंड की अमाउंट और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट की अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द सैलरी एंड इट इज कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर. इट इज द फर्स्ट पॉइंट. आर यू गेटिंग वेल? सेकेंड, दैट पार्ट ऑफ सम विच रिप्रेजेंट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, यानी जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स and no deduction or exemption is available at the time of contribution. And third one is that part of sum which represent the interest of employees contribution will be chargeable to tax under the head of IFOS. IFOS means income from other sources. Income from other sources is also called residuary heads of income. क्या बोला आपने सर? It is also called residuary heads of the income. Residuary heads of the incomes are the income which are not taken place under the preceding 4 heads. Under the preceding 4 heads means income from salary, section 15 to section 17, income from house property, section 22 to section 27, income from business and profession, section 28 to 44 ADA, capital gain, section 45 to 55, the income which are not या which has not been taken place preceding 4 heads will be taxable under the residuary heads of the income. सर फिर से बोलिए, मतलब उस 5 लाख रुपए में एम्प्लॉय का जो इतना इंटरेस्ट होगा ना बच्चों, वह इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा. जिस इनकम का कोई हेड नहीं साथ देता उस इनकम का कौन हेड साथ देता बच्चों? अरे अभी बताया ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. जिसका कोई नहीं है उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ना. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेजिडुअरी हेड्स ऑफ द इनकम. आर यू गेटिंग? रेजिडुअरी हेड्स ऑफ द इनकम. ओके. नेक्स्ट, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी.
की मैन मतलब ये नहीं कि चाबी घुमाने वाला इंसान की मैन होता, नो, की मैन इज ए इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सम एम्प्लॉइज आर स्पेसिफिक एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनका बिजनेस पे रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है. उनका बिजनेस से चले जाना बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है. ऐसे एम्प्लॉय के अक्सर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है बच्चों, और दिस इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. क्या सर? हाँ भाई, जो सुन रहे हैं आप, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इफ एनी सम रिसीव्ड बाई एन assessee अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाई वे ऑफ सच पॉलिसी. मतलब बाय वे सच ऑफ पॉलिसी मतलब यानी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी इट इज चार्जेबल टू टैक्स. जनरली मैं बताऊं, एट द टाइम ऑफ द लीविंग द जॉब, एट द टाइम ऑफ लीविंग द सर्विस, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में जितना पार्ट एम्प्लॉयर का होता है ना बच्चों, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. और जितना एम्प्लॉय का पार्ट होता है ना, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी और अदर सोर्सेस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी. ओके, आई प्रोसीड फर्दर. लमसम पेमेंट और अदरवाइज. ये लमसम का क्या मतलब होता है सर? लमसम मीन्स इकट्ठा, कम्यूटेट. लमसम पेमेंट और अदरवाइज इकट्ठा. एनी अमाउंट वेदर इन लमसम और अदरवाइज ड्यू टू assessee और रिसिव्ड बाई हिम फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी बंदे से मिले, बिफोर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट with that person or after cessation of the employment with that person will be called lump sum payment or otherwise will be called profit in lieu of salary. Okay, are you getting? Yes sir. So now in this slide, keyman insurance policy, lump sum is payment or otherwise. Before this slide, any amount of unrecognized provident fund, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो पार्ट एम्प्लॉयर का होता है इंटरेस्ट के साथ विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी. और एम्प्लॉय का जो फेस वैल्यू होता है इट इज नॉट कंसीडर्ड एट ऑल अंडर एनी हेड एंड द इंटरेस्ट पार्ट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ओके बच्चों, in this slide keyman insurance policy and lump sum payment of otherwise. Okay students, are you getting well? Yes sir. Provident fund. Now I am going to discuss the provident fund. Each and every one secure of its future, and employer are always try to secure the future of the employee. To secure the future of the employee, some funds are created by the employer, and these funds are named provident fund, recognized provident fund, unrecognized provident fund, superannuation provident fund. So these funds are created only to save the future of the employee by the efforts of the employer, because each and every employer wants to secure the financial position, secure the future financial position of the employee. And regarding this, कल को सुरक्षित करने के लिए आज जो पैसे बचाया जाता है that is called the reserve, that is called the fund. तो in various types of funds, first fund is provident fund. Provident fund scheme is a scheme intended to give substantial benefit to an employee at the time of his retirement. Under this scheme,
A specified sum is deducted from the salary of the employee of each month or regular interval as his contribution towards the fund. The employer also generally contribute the same amount out of his pocket to the fund. The contribution of the employer and employee are invested in approved security. Interest earned thereon is also credited to the account of the employee. Thus, the credit balance in provident fund account of an employee consists of the following. यानी इस फंड में ये सारे अमाउंट होते हैं. फर्स्ट, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन. सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन. थर्ड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. एंड फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. जैसे इस समय बच्चों एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें एम्प्लॉय की सैलरी से हर मंथ कितना काटा जाता है, 10% ऑफ सैलरी. उसमें एम्प्लॉयर 14% ऑफ सैलरी और मिला देता है. तो 10% और प्लस 14% इज इक्वल टू 24% वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है. जनरली ना एलआईसी के पेंशन फंड में, एसबीआई के पेंशन फंड में और आईसीआईसीआई के पेंशन फंड में, ये तीनों फंड जो बच्चे हैं ना, ये एक प्रकार का बाय डिफॉल्ट फंड होता है. हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे है. तो जनरली प्रोविडेंट फंड कंसिस्ट 4 कंपोनेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. ये 4 है. ये 4 एंगल होते हैं ना, 4 कॉर्नर होते हैं ना, 4 वेद होते हैं ना, वैसे 4 कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ प्रोविडेंट फंड. आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, this slide represents the types of the provident fund. Types of the provident fund, kinds of the provident fund. First, recognized provident fund. Second, unrecognized provident fund. Third, statutory provident fund. Or fourth, public provident, PPF, public provident fund. This public provident fund is a very prominent and popular fund. I suggest to each and everyone, this fund should be maintained by each employee, because the amount which is invested in public provident fund is deductible under section 80C of chapter 6A deduction, and interest which is incurred on the funds will be also exempt from the tax. Suppose your corpus amount of the PPF is rupees 15 and 16 lakhs. So according to the present rate of interest, near about 1 lakh rupees interest annually basis is credited in the account, and this annually amount of interest will be free from the tax. It is very important things. इस पे टैक्स नहीं लगता. PPF is very famous and popular fund which is run by the public sector banks as well as post office. Dear students, any amount which is accumulated regarding to the provident fund is paid to the employee at the time of his employment or resignation. In the case of death of the employee, the same is paid to the legal heirs. The provident fund represents an important source of small saving available to the government. Okay, hence the Income Tax Act 1961 gives certain deductions or savings in a provident fund account under section 80C of chapter 6A deduction. Chapter 6A का मतलब 6 means Roman 6 और A means capital A. Under chapter 6A, the deduction of 80C is available up to rupees 1,50,000. If we talk about the types of provident fund, first, recognized provident fund. Recognized provident funds are the fund which is approved, which is recognized
which is certified by the income tax department or income tax officer or government. This is called the recognized provident fund. प्रमाणित भविष्य निधि, जो प्रमाणित कर दिया जाए, जिसका सर्टिफिकेट मिल जाए, जिसको गवर्नमेंट अप्रूव्ड कर दे कि भाई ये फंड हमारे हिसाब से लीगल है, तो दैट इज कॉल्ड द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. सर इसको सर्टिफाइड प्रोविडेंट फंड नहीं कह सकते. अरे भाई गवर्नमेंट ने नॉमेनक्लेचर करके दिया है, क्या? रिकॉग्नाइज. सेकेंड वन इज अनरिकॉग्नाइज्ड और यूआरपीएफ. जस्ट इसी का उल्टा. क्या है सर उल्टा? क्या उलट जाए क्या? नो नो, उल्टा नहीं है. अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज द फंड विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट or income tax department. Generally this types of fund is constructed by the private sector as well as other sector. और मैं unrecognized provident funds की I was talking about. If any amount of unrecognized fund is received by the employee at the time of the retirement, so 50% part is considered as the employer and 50% rest part is considered of the employee, and 50% of the employer part including interest will be taxable under the head of income from salary, and 50% out of 50% the part of interest will be considered as a income from other sources. Okay. Statutory provident fund, वैधानिक भविष्य निधि, the fund which is approved by the central government as well as state government under the provision of the parliament is called the statutory provident fund. And fourth is public provident fund. Dear students, recognized first provident fund, recognized provident fund. Recognized provident fund means a provident fund recognized by the commissioner of income tax for the purpose of income tax. It is governed by Part A of Schedule 4th of Income Tax Act 1961. This schedule contains various rules regarding the following. First, recognition of the fund, employees and employer contribution to the fund, treatment of the accumulated balance, etc. A fund constituted under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 will also be called as a recognized provident fund. कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि द फंड विच इज रिकॉग्नाइज अप्रूव सर्टिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. मतलब ये है भाई. ओके, नाउ आई प्रोसीड फर्दर. अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ, अ फंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, not certified, not verified by the income tax commissioner. How क्या? Not लगा दो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, सारे प्रोविजन में not लगा दो, that will be treated as अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. हाँ, और क्या? नेक्स्ट स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ. ये क्या है सर? स्टैच्यूटरी मतलब स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज गवर्न्ड बाय द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925. It applies to employee of government, railways, semi-government institution, local bodies, universities like BHU, Delhi University, Jamia Islamia University, Central University of the Rajasthan, Central University of the Kerala, all types of central and state universities, including all recognized educational institutes like as IITs, IIMs. Okay, यानी द फंड विच इज रेगुलेटेड अंडर दी सेक्शन 1925 will be treated as a statutory provident fund. Next one is public provident fund, PPF. Public provident fund is constructed under the Public Provident Fund Act 1968. बड़ा इंपॉर्टेंट है.
सब लोग को परचेज करना चाहिए, एक अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैक्सिमम सीलिंग लिमिट इज 1,50,000 to secure the financial future of employee. Each and every employee deposit if any employee, each and every employee invest some savings in the PPF, because the rate of the interest on the PPF is not smaller than the other investment. It is a secure fund. A membership of the fund is open to every individual, though it is ideally suited to self-employed people. कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल भी इसे परचेज कर सकता है, इस पे पैसा लगा सकता है, मतलब बिजनेसमैन भी लगा सकते हैं। वेरी वेरी पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट फंड, ऐसा बोल चुका हूं। और सैलरी एम्प्लॉय में आल्सो कंट्रीब्यूट टू पीपीएफ इन एडिशन टू फंड ऑपरेट बाय द एम्प्लॉयर। जो आपका ऑपरेटर, जो आपका एम्प्लॉयर फंड बनाया है ना, ये आरपीएफ बनाया है, यूआरपीएफ बनाया है, उसके अलावा भी पीपीएफ में पैसे जमा कर सकते हैं। ईच एंड एवरी वन wants to secure its financial future. An individual may contribute to the fund on his own behalf as also on behalf of minor of the whom he is guardian. Minor के नाम से भी PPF account it may be opened. Okay, तो PPF account is very very popular and important account. Dear student, what are the tax treatment according to the various types of fund? In the case of recognized provident fund, employer's contribution is taxable excess to 12% of salary, means under the head of the salary under section 17 subsection 1 12% के ऊपर टैक्सेबल होता है। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है, मान लो 13% कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो 1% सैलरी मीन्स का टैक्सेबल होगा। और सैलरी मीन्स यहाँ 4 आइटम होता है, बेसिक पे, डीएनएस पे, डीएनएस अलावेंस इफ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस फिक्स कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज, यही होता है। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का कोई टैक्सेबल नहीं होता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होता है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एज देयर इज ओनली असेसीज ओन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यह असेसी का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर से कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में करता है तो 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपए की छूट मिलती है अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम नहीं मिलती है, जान लो। ऑप्शनल टैक्स रिजिम का मतलब शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC क्लॉज 1A। और इन द केस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, not eligible for deduction. Unrecognized provident fund में employee contribution is not deductible. In the case of statutory provident fund, it is eligible for the deduction under section 80C up to rupees 1,50,000 when the assessee adopt the optional tax regime or shifting out the default tax regime. In the case of public provident fund, eligible for the deduction under section 80C up to the rupees 1,50,000 if assessee या employee adopt the optional tax regime. Okay. Next one, interest credited on the employee's contribution. Interest credited on the employee contribution, if any interest is credited in the case of recognized provident fund, it is exempt up to 9.5% of the salary under the head of salary. Or in the case of unrecognized provident fund, not taxable at the time of credit of the interest. In the case of statutory provident fund, it is fully exempt. In the case of public provident fund, not applicable. और इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी इन द केस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बट इन द केस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द इंटरेस्ट, बट इन द केस ऑफ एग्जम्प्ट up to the certain limit of the contribution in the case of statutory provident fund or in the case of public provident fund PPF fully exempt. So these are the rules of the taxation of the amount of the fund at the time of withdrawal or retirement or termination. अगर
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से कुछ भी पैसा निकाला जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इट विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 सब्जेक्ट टू द सर्टिफाइड फुलफिल ऑफ द सम कंडीशंस. In the case of unrecognized provident fund, employees' contribution is not taxable. Interest on employees' contribution is taxable under the head of other sources. Employer contribution and interest is taxable under the head of the salary. But in the case of statutory provident fund, it is exempt under section 10 subsection 11. In the case of public provident fund, it is also exempt under section 10 subsection 11. So this is the example. This is the example of the case of the funds regarding to the an assessee is Mr. A, and the solution of this question is given on this slide. You can see and you can understand on the basis of the previous rule. So now I hope you all get the each and everything regarding to the provident fund, superannuation provident fund, statutory provident fund, unrecognized provident fund, public provident fund, recognized provident fund. So now I hope I will see you in the next class. So thanks to all of you. Have a nice day.